Hello students, today we are continue our lesson An Encounter of a Special Kind. Already we had seen that how the writer want to protect the baby langur from the male langur and which action he had taken. Now we will see a go ahead. My attention was fixed on the revival of the baby langur. The writer said that his all attention was only one, to protect the baby langur. Here we can ask the question, what was the attention of the writer? So the attention of the writer was fixed on the revival of the baby langur. Revival, it means coming back, bringing up, पुनः चेतना में लाना, जिंदा करना, होश में लाना. It's called the revival. Suddenly I had an uncanny feeling of being watched. Uncanny, it means strange, something different, vichitra. It's called the uncanny. The writer feel. How did the writer feel? Writer feel uncanny. It means something strange. Find out one word for the strange word. Strange word के लिए appropriate word. It's a uncanny. Here we can ask and a question tag of it. I had an uncanny feeling of being watched. इसका question tag क्या हो जाएगा हमारा? Hadn't I? I turned away from the coop and looked up. राइटर जो है वो टर्न होकर देखता है कूप से, जो पोल्ट्री कूप है, मुर्गी पालन का जो स्थान बना हुआ था. Here we can say that using not only but also. So I turned away not only from the coop but also, and को रिमूव करके हम लिखेंगे but also looked up. Identify the tense of it. I turned away from the coop. Turn, turned. Verb का second form है, so that it's our simple past tense. Change into past perfect tense. I past perfect is, it means had plus verb का third form. So here we get answer. I had turned away from the coop. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. It means writers जो move कर रहा था बेबी लंगूर के साथ, जो भी एक्शन ले रहा था, वो सारे एक्शंस जो है वहाँ पे जो बेबी लंगूर की माँ थी, मदर लंगूर, वो किचन रूफ पर बैठकर देख रही थी. Here we can ask the question, who sat on the kitchen roof? We get the answer, the mother langur. Mother langur was sitting on the kitchen roof. Underline the present participle. So here, present participle, it means verb plus ing form. Watching. Watching is present participle. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Because she was a mother. So that she was confirming. वो कंफर्म कर रही थी कि कहीं उसके बच्चे को कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है. Because she was a mother. Here we can ask the personal response question as like the describe the mother-child relationship. Yeah, according to you, do you think mother-child's relationship is very important? Yes. The relationship between mother and the child is very close. Because mother love for a child from their heart.
Her love and affection for her children are boundless. She looks after them, nurses them to protect their child. The child also loves its mother. And mother always guide, inspire and encourage their child throughout the year. So that the mothers and childs, it's a wonderful and pleasant relationship in this world. So in this way, you can describe your personal response. Question. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. यहाँ पे जो बेबी लंगूर था उसे महसूस हुआ उसकी माँ के होने का. So that the male langur, baby male langur, he started to sobbing, सिसकियाँ लेना. सोब मतलब सिसकियाँ लेना और थोड़ा सा जोर से रोने लगा. Here we can say true and false type of question we can ask. The baby langur sensed the presence of his mother. It's a true or false? So according to me, it's a true because the baby sensed the presence of his mother. Here we can say change the voice. The baby sensed the presence of his mother. तो इसका चेंज द वॉइस हमारा कैसा हो जाएगा? द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर वॉज सेंस्ड बाय द बेबी बिकॉज इट्स आवर सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस के चेंज द वॉइस में हम वॉज वेयर लगाते हैं. आई रिट्रीटेड फ्रॉम द डोर ऑफ द कूप टू अलाउ the mother access to her baby. Retreated, it means पीछे हटना, go back. तो the writer जो था वो पीछे हट जाता है. Here we can ask the question, why did writer retreat from the door? Why did the writer retreat from the door of the coop? Then we get the answer. The writer retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. कि मदर जो है वो उसकी जांच पड़ताल कर सके अपने बच्चे की. So that the writer retreated. इसलिए वो पीछे हट जाता है. Underline the infinitive. We can ask the question. Underline the infinitive. Here we get the answer. To allow. It's our infinitive. Infinitive it means to plus verb का first form. Immediately the mother descended on the floor of the coop. Descended मतलब उतर के नीचे आना. To come out. यहाँ पे we can ask the question. Find out one word for the move downward. नीचे उतर कर आना. Move downward. Then we get the answer. Descended. The mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arm. माँ जो है वो नीचे उतर के आती है और अपने बेबी लंगूर को अपने आर्म में अपनी भुजाओं में ले लेती है. Here we can ask the question, what was the action of the mother langur? So the mother descended on the floor of the coop and second picked up the baby in her arm. Third action, she gave the baby a thorough body inspection to check his injuries. And fourth action, then cuddled him tightly in her bosom. Bosom मतलब हृदय से लगाना. Cuddled मतलब held closely
हग, एकदम चिपका लेना, सटा लेना. It's called the cuddle. Here we can ask the question. Find out one word. Held closely. Held closely. We get the answer. Cuddled. तो अपने हृदय से एकदम बच्चे को चिपका लेती है. That was the action of the mother langur. Here we can ask the question further, not only but also. The mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. Used not only but also. The mother not only descended on the floor of the coop and को remove करेंगे और लिखेंगे but also picked up. But also picked up the baby in her arms. In this way we can write using not only but also. Here one question we can ask. She gave the baby a thorough body inspection. Change the voice. तो change the voice simple past tense का है. Now we are using was where plus verb का third form. तो the baby was given a thorough body inspection by her. या इस तरह से भी यहाँ से बन सकता है because there is a two objects, the baby and second one is a thorough body inspection. इस तरह से यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं. तो यहाँ पे हम इससे भी लेकर बना सकते हैं, द बेबी से भी बना सकते हैं और अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन से भी बना सकते हैं. तो यहाँ पे इसका हो जाएगा अ थरो बॉडी इंस्पेक्शन was given the baby by her. In this way we can change it. Further change the voice. Now we will go ahead. The baby found great solace. Solace मतलब होता है शांतता मिलना, comfort and peace. It's called the solace. So the baby found a great solace in her caring arm. तो जैसे ही बच्चा जो है अपनी माँ के गोद में पहुंच जाता है तो the child feel very protect, अपने आप को बहुत ही प्रोटेक्टिव महसूस करता है. The mother sat still with the baby in her lap. lap मतलब गोद में बिठा के रखना. For a few minutes. यहाँ पे माँ जो है वो अपने बच्चे को कुछ समय के लिए गोद में अपने बिठा के रखती है. Add a question tag of it. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. Sit का sat होता है, verb का second form. So that यहाँ पे क्या हो जाएगा? Didn't she. मदर के लिए she. It was almost as if she was pondering. Pondering. It means thinking all deep. गहन चिंतन करना. It's called the pondering. Ponder. Ponder में ing जुड़ा है. Present participle pondering. Over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from the further assault. Assault, it means attack, war. तो वो सोच रही थी, विचार कर रही थी कि किस तरह से वो अपने बच्चे की जान की रक्षा कर सकती. How she could keep the baby safe from the further assault, कि फिर से उसके ऊपर आक्रमण ना हो, उसके लिए वो क्या कर सकती है, उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी. टू फिगर आउट, इट्स अ फ्रेज वर्ड. टू फिगर आउट, इट मीन्स टू बी एबल टू थिंक until you solve the problems. प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सोचना. Here we can say frame of one sentence from to figure out. To figure out का यूज करके सेंटेंस फॉर्मेट करना है.
You can format that. I figure out why was my friend upset. मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्यों जो है मेरा दोस्त मुझसे गुस्सा है, या whatever you want, you can frame your own sentences. Now we will go ahead. For a few seconds, the mother langur looked straight into my eyes. Here the writer described that how the animals show their gratitude. किस तरह से वो अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं. The mother langur looked straight into my eyes. Add a question tag. तो looked का हो जाएगा didn't she. Even today I cannot forget that look in her eyes. The writer described his memories that he can't forget. Here we can say that I cannot forget that look in her eyes. Add a question. Use able to. तो कैन को रिमूव करके हम is am are able to लगाएंगे. तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? I am not able to. अब not है तो लिखेंगे हम. I am not able to forget that look in her eyes, showering silent gratitude on me for the saving her child. ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाहती है कि thank you to save my child. So that अभी animals है, they can't speak, so that they show their gratitude from their eyes. वो जो है अपनी आँखों से अपना ग्रेटिट्यूड, अपनी कृतज्ञता जो है, अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं. I was overwhelmed by the emotion. He described that कि व्याकुल हो जाना, तड़प उठना. The writer described that covered completely with motions. He said that कि वो व्याकुल हो उठा, भावुक हो उठा. Overwhelmed, it means व्याकुल होना, भावुक होना. Identify the voice. It's an active voice or a passive voice? It's a passive voice because यहाँ पे was where आया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, by है. अगर by लगा हो तो it means that is our passive voice. तो I was overwhelmed by the emotion. अब इसका अगर हमें एक्टिव वॉइस करना है तभी एक्टिव वॉइस इट्स आवर वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस. तो इसका हो जाएगा द इमोशन ओवरब्लेम्ड मी. वॉज भी हट जाएगा, बाय भी हट जाएगा. तो इसका एक्टिव वॉइस हो जाएगा द इमोशन ओवरब्लेम्ड मी. सेड अ यूनिवर्सल मदर होल्डिंग stricken child in her lap. कि जैसे दुनिया की सारी माँ अपने बच्चों पर अपना प्यार उड़ेल देती हैं, शो करती हैं कि अगर बच्चा कहीं से सफ़र करके आता है, stricken it means to hit hard, कुछ उसने कठिनाई का सामना करके आता है, तो किस तरह से उसे प्रोटेक्शन देती है, किस तरह से उसे अपने गोद में बिठा के रखती है. तो उसी तरह से यहाँ पर जो मदर लंगूर थी वह भी अपने बच्चे को अपने पास बिठा कर रखी थी. देन इन अ फ्लैश, कुछ ही क्षण में, इन अ फ्लैश दैट इज आवर फ्रेज वर्ड. यूज इन अ फ्लैश एंड फ्रेम अ सेंटेंस. We can make a sentence. In a flash, my friend was invisible. You can make your own sentences like this. She jumped with her baby clinging. Clinging मतलब चिपका कर रखना. To hold to her belly
and reached our kitchen roof. राइटर ने कुछ ही क्षण में देखा कि जो मदर लंगूर थी वो बेबी लंगूर को अपने बेली में, अपने पेट पे चिपका कर तुरंत किचन रूफ पर पहुंच गई. She jumped with her baby clinging to her belly. Add a question tag. तो jumped है, इसका हो जाएगा didn't she. What was the action of the mother langur? The mother langur jumped with her baby clinging to her belly and reached the writer's kitchen roof. She surveyed the area for the vicious मतलब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो हैं, wicked person, evil person, find out. या इस तरह से भी यहाँ पे ग्लोसरी के लिए पूछा जा सकता है कि राइट डाउन वन वर्ड फॉर द विक्ड. अभी वन वर्ड विक्ड के लिए क्या है? विसिस. मेल लंगूर एंड देन लेफ्ट मतलब छलांग मारना. लीप का पास्ट टेंस है लेफ्ट. एंड लेफ्ट अवे इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्लेस ऑफ द वायलेंट एनकाउंटर. इट मीन्स जहाँ पे ये एनकाउंटर हुआ था उसके अपोजिट दिशा में मदर लंगूर अपने बच्चे को लेकर चली जाती है. तो इन दिस वे दैट वाज द एक्शन ऑफ द mother langur. Here we can ask the one question for the personal response. What did the mother langur seem to convey to the narrator? कि नरेटर को देखकर वो क्या कहना चाहती थी. So according to me, the mother langur seemed to convey the narrator that she was very grateful to him for saving her child. कि उसने जो है राइटर ने उसके बच्चे की जान बचाई. So that she want to express her gratitude. She was expressing her big thanks to him through her silent eyes. Her eyes showed silent gratitude for the narrator, for the kindness and the compassion. So in this way, the mother langur showing their gratitude. The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication, interspecies मतलब दूसरी जाति में, species मतलब होता है जाति, inter it means दूसरी, तो दूसरी जाति में communication and the mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationships hums into actions. It means the writer described that कि इस छोटी से मुलाकात में राइटर ही अंडरस्टूड दैट कि किस तरह से दूसरी जाति में, दूसरी प्रजाति के लोगों से किस तरह से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, हाउ वी कैन स्पीक. अब यहाँ पे जो है मदर लंगूर, शी कांट एक्सप्रेस बाय स्पीकिंग. अभी बोलकर वो अपने एक्सप्रेशंस नहीं बोल सकती थी, बट शी एक्सप्रेस हर थॉट्स, हर ग्रैटिट्यूड बाय हर आईज. लेकिन उसने अपने आंखों से जो है ग्रैटिट्यूड को प्रकट किया. Here we can ask the question, what did the writer learn from the brief meeting? The writer learned that how interspecies communication and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, कि किसी के साथ भी कोड मतलब भावनात्मक रूप से हम किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं. ह्यूम्स इनटू एक्शन, इट मीन्स बिकम एक्टिव, सक्रिय रहना, कि किसी के भी साथ हम किस तरह से सक्रिय रह सकते हैं. ऑन दैट टाइम द राइटर लर्न दैट.
The mother language showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. Compassion, it means kindness, sympathy, daya. Here we can say that, find out the one word for the compassion or the kindness, sympathy or the kindness. We get the answer compassion. So on that day, the writer learned that कि किसी के लिए भी ज़रूरी नहीं है कि अगर हमें इंसान और जानवर के बीच में कम्युनिकेशन रिलेशन स्टैब्लिश करना है, स्थापित करना है, तो उसको फूड देंगे तो ही जो है एनिमल्स हमारी तरफ अट्रैक्ट होंगे. नो, दे नीड समथिंग डिफरेंट. दे नीड ट्रस्ट, भरोसा होना चाहिए, कंपेशंस होना चाहिए, आप में दया भाव होनी चाहिए, आप में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसको समझने की क्षमता होनी चाहिए. तो जाके एनिमल्स दे कैन अट्रैक्ट ऑन योर वे. आपकी तरफ जो है एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे. 55 years have passed. The writer described that कि इस घटना को हुए 55 years हो चुके. And I am now 70 years. The writer described that कि इस घटना को हुए जो है यहाँ पर 50 years हो गए, 55 years हो गए. और अब जो है राइटर वॉज 70 years old. इट मीन्स व्हेन दिस इंसिडेंट वॉज टेकन अ प्लेस, द राइटर वॉज ओनली 15 years. ओनली 15 साल का राइटर था. बट आई स्टिल फॉन्डली रिमेंबर दैट एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. तपन मुखर्जी ही डिस्क्राइब दैट. फिर भी मुझे याद है कि वो जो एनकाउंटर था, दैट वॉज द स्पेशल फॉर मी. Here we can ask the personal response type of question like what is your mother's state of mind during your illness? जब आप बीमार होते हो तो आपकी माँ का एक्शन क्या होता है? I think so every mother is always worried about her child. She is restless and uneasy all the time. She keeps herself away at night worrying about ill health. So in this way you can describe what was the action of your mother when you feel ill. So in this way we learn that how the writer described his special kind of the encounter.